Hi everyone, I'm Dr. Anshuman Pancholi and let's revise another important topic for INI-CET, that is the TNM classification of breast and the staging of breast cancer. ठीक है, बहुत frequently questions पूछे जाते हैं, almost every year this question is asked. So let's start revising it. Alright, so the first thing that we need to know is what all is included in the TIS or the carcinoma in situ. So we include DCIS and the Paget's disease of nipple. Only nipple. Let's remember this, that Paget's of the invasive ductal carcinoma is not included here. So carcinoma in situ mein Paget's disease of the nipple and DCIS. LCIS is no more a carcinoma in situ. It is a high risk lesion. That is also important. That is a change that has been introduced in the 8th edition of AJCC. Alright. T1 means the lesion which is size of the region is less than or equivalent to 2 centimeters. T2 would be more than 2 but less than equivalent to 5 centimeters. T3 when the greatest dimension, ये जितने भी size है बेटा greatest dimensions की बात होती है, ठीक है. So T3 is more than 5 centimeters. T4 would be size of the lesion does not usually matter. So any size with extension to either the chest wall or the skin. So extension to the chest wall and or skin. अब skin का involvement extension मतलब you will have ulceration, you will have पोदियोरांज and you will have macroscopic, जो आपको दिखेंगे macroscopic satellite nodules which are separate from the primary tumor. ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूमर के साथ नहीं, separate from the primary tumor. Now invasion of the dermis alone does not qualify as T4. Similarly, केवल pectoralis muscle का involvement also is not T4. These are the common trap zones जहाँ पे वो examiner आपको फंसाएगा. So this is also important for you need to know. All right. Next thing is अब T4A, T4B, T4C or T4D. These are the most frequently asked zones. So T4A means when there is extension to involve the chest wall. अब chest wall से मतलब 3 muscles we talk about. Serratus anterior, we talk about the intercostal muscles and ribs. So 3 structures basically. But remember here that other than these structures, अगर आप बोलो ये structures involved नहीं है and there is an isolated involvement of the pectoralis major muscle, that does not qualify as T4A, and this is what is the one of the most frequently asked pointers here, right? T4B would be involvement of skin. मतलब क्या क्या चीजें पढ़ी थी बेटा? Ulceration, we talked about podiorange and that too podiorange मतलब less than 1/3 of the breast. So POD less than 1/3 is what is important here. But and the third thing is obviously is macroscopic satellite nodules. क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? Dimpling, which is because of the involvement of Cooper's ligament, and retraction is because of the involvement of lactiferous duct. ये दोनों ही चीजें किसी भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करती हैं. Do not indicate the T4B. तो डिम्पलिंग रिट्रैक्शन दिया है नहीं दिया है doesn't really matter. That does not indicate the skin involvement of T4B. ठीक है, all right. T4C would be T4A plus T4B. अभी तक T4C नहीं पूछा है तो बेटा क्वेश्चन में क्या देगा? वो आपको चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट भी देगा, साथ में स्किन इन्वॉल्वमेंट के फीचर भी देगा. तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं एक पढ़ के स्किन इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है तो T4B लगा दिया या चेस्ट इन्वॉल्वमेंट पढ़ के सीधा T4A. पूरा क्वेश्चन पढ़ना, दोनों के फीचर्स मिल रहे हैं तो इट विल बी T4C. याद रखना आप ये क्लासिफिकेशन में यू रीड T4A plus T4B, but how to apply T4A plus T4B is extremely important, right? Coming on to the T4D. Now T4D includes the inflammatory breast cancer which involves the podiorange and the redness involving more than 1/3 of the breast, and that is what is extremely important for you need to know, right? Okay, अगली चीज बेटा is the end staging. याद रखना, this is the clinical end staging we are talking about. So N0 when there is no regional lymph nodes involved. N1 would be when you have ipsilateral mobile level 1 and level 2 axillary lymph nodes involved. काम की चीज क्या है? That they are mobile or movable nodes on the same side, ipsilateral. When these ipsilateral mobile lymph nodes become fixed or matted, the N1 converts into N2A. तो N2A is similar to N21 and N1. अंतर क्या है? Now the lymph nodes have become fixed or matted. What is N2B? When there is involvement of ipsilateral internal mammary nodes in the absence of involvement of the axillary nodes. केवल internal mammary nodes ही involved हैं ipsilateral, that is N2B. N3A would be जब level 3 axillary lymph nodes या ipsilateral infraclavicular lymph nodes involved हैं, that is N3A. What is N3B? When you have involvement of both ipsilateral internal mammary nodes as well as the level 1 and level 2 axillary nodes. These are your
involvements for the N3B. N3C का मतलब है ipsilateral supraclavicular lymph node involvement. अब पहले supraclavicular lymph node involvement को metastatic disease बोलते थे, अब ऐसा नहीं है. It is classified as N3C. This is the change that you need to know about. Okay, next thing would be कि कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व है सो दैट वुड बी इंडिकेटिव ऑफ अ मेटास्टैटिक डिजीज. याद रखना, व्हेन देयर इज नो कैंसर, मतलब उस तरफ कोई कैंसर नहीं है, कैंसर का जो मास है, मास इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड एंड कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड आपका अपोजिट साइड में लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है, जिस साइड के ब्रेस्ट में कोई मास नहीं है, दैट इज यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ अ मेटास्टैटिक डिजीज. ओके, ऑलराइट. एम स्टेजिंग में M0 मीन्स देयर इज नो मेटास्टासिस, M1 वुड बी डिस्टेंट मेटास्टासिस. सो दिस वाज योर बेसिक TNM कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू नो. अब दूसरी चीज जो आप पूछी जाती है वो बेटा वो स्टेजिंग होती है. इसको कैसे अप्लाई करना है TNM को स्टेजिंग वाइज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब थोड़ा सा इसमें रटना इन्वॉल्व है. लेट्स ट्राई एंड रीड एवरी स्टेज इंडिविजुअली स्लोली, तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, ओके. व्हाट इज स्टेज 0? व्हेन यू हैव a carcinoma in situ, TIS, without nodal involvement or mets, that stage 0, TIS, N0, M0. What is stage 1A? When you have T1, N0, M0, N अभी भी 0 है, बट अब क्या कैच है? स्टेज 1B इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर T0 है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोमेट्स इन द नोड. सो नोडल माइक्रोमेटास्टासिस आपको मिल रहे हैं इन स्टेज 1B. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज स्टेज 1B. Stage 2A would be when there is either T0 or T1 along with N1. So T0 or 1 along with N1, M0 is your stage 2A. Also T2, N0, M0 is also stage 2. What is stage 2B? When you have T2 with N1, M0 or T3 with N0, that is your stage 2B. What is stage 3A? अब stage 2 complete हो चुकी है. What is stage 3A? When you have an N2 along with T0, N2 with T1 or T2. So T0 to 2 along with N2, M0 is stage 3A. Also, if with T3 you have N1 or N2 with M0 is your stage 3A. Stage 3B क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. T4 अगर आ गया है तो याद रखना आप 3B में पहुंच चुके हो. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि अगर T4 की हम बात करें तो स्टेज 3B हम पहुंच चुके हैं. अब N0 से 2, N3 नहीं होना चाहिए. T4 with N0 to 2, M0 obviously is your stage 3B. Stage 3C is whenever you have N3, कोई T हो कोई फर्क नहीं पड़ता, any T along with N3, M0 is your stage 3C. And stage 4 would be when you have distant mets, M1 है तो it is stage 4. अब ये तो आपकी स्टेजिंग हो गई. इस पर डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आएगा, आइदर TNM पे या स्टेजिंग पे क्वेश्चन आता ही आता है. अभी हम सॉल्व भी करेंगे इसके क्वेश्चंस. नाउ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं. व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट्स? लेट्स अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन. व्हेन यू हैव टू मासेस इन द सेम ब्रेस्ट, किसके अकॉर्डिंग TNM T staging कैसे, how will you calculate the T staging? So the bigger mass is what qualifies. हम क्या बोलते हैं? The greatest dimension we have to take. So if there's a 6 centimeter and a 4 centimeter, so 6, suppose you have 6 into 2 and you have 4 into 2. So 6 into 2 will qualify as the mass that will be taken for the TNM staging. So 2 masses in the same breast calculated as per the bigger mass. Then if there are masses in both the breast, तो you have separate classification for both the breast. Common classification नहीं बनाते हैं. Next point that you need to remember. What is the investigation of choice for staging? It is PET CT. What do we use? We use 18 FDG. T half उसका 110 मिनट होता है. Now key points that I've discussed. Let's revise those key points once again. LCIS, lobular carcinoma in situ, we said is now a high risk benign lesion, not a cancer anymore. Second important point, inflammatory carcinoma remains inflammatory carcinoma, is staged at inflammatory carcinoma even after neoadjuvant chemotherapy. Even if there is complete remission, it is still inflammatory carcinoma, मतलब T4D रहेगा. So inflammatory carcinoma remains the same despite of complete remission after NACT, that is neoadjuvant chemotherapy. Now फिर सैटेलाइट नोड्यूल्स वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा था, लेट्स रिवाइज दैट. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू वी मीन बाय सैटेलाइट नोड्यूल्स? व्हेन यू हैव इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर से अलग आपको मैक्रोस्कोपिक दिखने वाले नोड्यूल्स हैं, सो शुड बी सेपरेट फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर टू बी क्लासिफाइड एज T4B. Which is the most common site of tumor in the breast? We know it's the outer quadrant. Usually the left side is more commonly involved. Why the upper quadrant? Because 50% of the TDLU, terminal ductal lobular unit, is located in the
upper outer quadrant. So this was the basic concept. अब बेटा कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे confuse हो जाते हैं. Sometimes they don't give you exact stage. They mention that the tumor is अर्ली ब्रेस्ट कैंसर. अर्ली ब्रेस्ट कैंसर मतलब आपको स्टेज इंप्लाई करने की कोशिश कर रहा है. सो व्हाट ऑल स्टेजेस आर इंक्लूडेड इन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर? स्टेज 0 to stage 2. So 0, 1A, 1B, 2A, 2B. This is what classifies as early breast cancer. What is locally advanced breast cancer? All stage 3, 3A, 3B, 3C. This is all LABC. And what is meant by metastatic breast cancer? Stage 4. जो अभी हमने staging पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये classification आपको पता होना चाहिए. ठीक है? So this was the theory that we needed to know. Let's solve two important questions on this theory. पहला question बेटा, these are all exam questions. ठीक है? These are all important pointers that you need to know. Stage 4B breast cancer includes all except erythema involving, except पूछा है क्या नहीं है, erythema involving more than 1/3 of the breast. Is it true? That qualifies as stage T4D inflammatory breast cancer की तरह जाता है. This is not true. Pyodorange yes, satellite nodules yes, ulceration, all other skin involvements. तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A, right? Okay, simple question. Next question. ये आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आपको TNM स्टेजिंग निकालनी है. A 34-year-old female presented with lump in her left breast for 2 years. ठीक है. On examination there is a 6 into 4 centimeter mass which is palpated. Greatest dimension लेंगे तो 6 centimeter आपने लिया. Dimpling of the skin and bloody discharge from the nipple is present. कोई significance है क्या? Neither dimpling का नहीं bloody discharge, कोई significance नहीं है. The lesion is invading the pectoralis major muscle. इसके आगे कुछ नहीं दिया. चेस्ट वॉल के कोई स्ट्रक्चर ना सेराटस एंटीरियर ना चेस्ट रिब्स नहीं इन्वॉल्व है आपकी, और आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व नहीं, तो चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट नहीं है. आइसोलेटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेक्टोरालिस मेजर की कोई सिग्निफिकेंस है क्या? T4 क्वालिफिकेशन के लिए नहीं है. तो इट इज अकॉर्डिंग टू द साइज इट इज कमिंग एज व्हाट? 5 सेंटीमीटर बड़ा इज T3. तो T3 हमको यहाँ समझ में आ गया पहली चीज. Then it says that ipsilateral level 1 and level 2 matted axial lymph node. Level 1, level 2 matted या fixed है, तो हमने क्या बोला था? 1 से 2 में आ चुके हैं. So this is N2A. ठीक है. Are present, no distant mets मतलब M0 हो चुका है. So our staging is T3, N2A, M0. अब इसमें क्या ऑप्शन है बेटा? T3 पता है, एक ही ऑप्शन में है. So this is option number B. N2A नहीं mentioned है, तो that is fine with us. So we know that this is the answer. So this was about the classification of breast and the staging. Very important, आपको याद रखना है, एग्जाम से एक दिन पहले से रिवाइज करके जरूर जाना. All right, thank you so much.